Good morning, everyone. Today we are going to start very important chapter, that is determination of income and employment. As you know, this chapter is so important. Every year, 12 marks question is asked with this chapter. So that what you will inculcate all the facts which are discussed here right now. For your kind information, there are two approaches for the income determination. That is ADS approach. First one is ADS approach and second one is saving and investment approach. First we shall discuss what is AD, that is aggregate demand. So now write down all of you what is aggregate demand. Please note down everything. So first write down aggregate demand. In short, it is called AD. Write down AD refers or aggregate demand. Aggregate demand refers to the total demand for goods and services in an economy in a year. So please note down, aggregate demand refers to the total demand for goods and services in an economy in a year. It is the demand of total demand of goods and services in the economy. So this is called aggregate demand. Now we shall discuss what are its components. Then it will be clear more. So components, now write down components of aggregate demand. Now, so far components is concerned, although we have discussed in national income chapter in expenditure method, again we shall discuss one by one. First one is private final consumption expenditure. What is this? Private final consumption expenditure. In short, it is called PFCE. So note down what is this. Although I have discussed in national income chapter, but again you should note down. Please note down. It refers or it means or it refers to the expenditure. It refers to the expenditure on goods and services by the households. Private final consumption, or you can write here, it refers to the expenditure on consumption. Here you write on consumption also, please add. Expenditure on consumption of goods and services by the household in an economy in a year. So note down like this. Private final consumption expenditure refers to the expenditure on consumption of goods and services by the households in an economy in a year. So in a year, whatever expenditure is made by the
households on the purchase of goods and services, that is called private final consumption expenditure. It is clear? You can write in other language also. You can write the private final consumption expenditure is the expenditure by the household which are made on the purchase of goods and services in an economy in a year. So it is the consumption expenditure by the household. Second one you write down investment expenditure. Investment expenditure. This is indicated by I. Write down what is investment in the expenditure. It refers to the expenditure on capital goods by private investors. So what is this? Investment expenditure means it refers to the expenditure on capital goods. Several times I have discussed earlier. Capital goods are those goods which helps in the production of other goods. So expenditure on capital goods, and examples of capital goods are machine, tools, building, implements, as well as buildings I have already discussed. So expenditure on these items are called investment expenditure. By whom? By private investors. So that I implies the investment or expenditure on capital goods by the private investors. Here government is not included. So that you should write like this. Third one is government final consumption expenditure. So it is also known as government GFCE. You write this government final consumption expenditure GFCE. Write down it refers to the expenditure of the government, GOVT short I have written, of the government on the purchase of goods and services for the collective want of the people. What is this? Government final consumption expenditure. It refers to the expenditure of the government on the purchase of goods and services. Sorry, two times goods written. Goods and services for the collective wants of the people. I am going to clear here. Some goods are constructed or some goods are purchased or made by the government for the collective wants, because whatever investment is done by an individual, that is for the single use, or you can say individual use. But if government is spending money, if government expenditure is somewhere, it is completely for the collective wants. Suppose construction of dam, construction of bridge, construction of road or railways, etc. These are made, or these expenditures for the
collective wants. I think you have understood this one. So all these expenditure comes under government final consumption expenditure. Now last one, fourth component is net export. Net export. As you know, net export, it here write down NE, or in bracket you can write NE is also known as X minus S. It is the difference of, it is the difference of export and import. Note down, export and import. It is the difference of export and import. Export you are doing, import you are doing. The difference of this transaction is called net export. So aggregate demand has four components. I am writing here in short. AD, you write down AD equal to C, that is private final consumption expenditure. Instead of C you can write PFC also. Here I am writing both. Here I am writing both. AD, in short it is called C plus I plus G plus NE. What it means? C is private final consumption expenditure, in short. I is investment expenditure, G implies government final consumption expenditure, and NE net export. It is, you write here X minus N. X means import, export, M means import. So you can write AD like this, or you can write AD like this also. AD equal to PFCE. PFC, private final consumption expenditure. Second one is investment expenditure. Here you can write I. Third one is GFCE. GF, government final consumption expenditure, plus NE, net export, or in bracket here write down X minus M. So in this form you can also write. These two are these four components belongs to aggregate demand. Now we have to think. Keynes has taken only two components for the determination of income and employment. He assumes that there is no intervention of, here I am going to remove this, then I shall clear more. I am going to remove this one, let me remove. Keynes assumes that there is no intervention of government and closed economy. There is no open economy. And as according to him, there is only two sectors in an economy. And when we consider the two sectors, then AD equal to only C plus I. According to Keynes, here I am going to omit this one also. Otherwise, you will be in confusion. Now, just you learned this time that there are four components of aggregate demand. But Keynes has, Lord James Keynes, he propounded the income and employment theory. According to him, he considers only two components, because he thinks that there is no intervention of the government, so there is no government sector. Second is no export and import. It means closed economy. So that according to Keynes, you will write Keynes. J.M. Keynes, a great economist who has written a book especially on income and employment theory. It is also known as income and employment theory, which was published in 1932. No, not exactly. I am not knowing the publication of the book. So James Keynes, according to him, AD equal to C
plus I. He assumes only two sectors, household sector and investment sector. It means firms. They consider only two. So whenever we shall discuss AD, you have to keep in memory AD equal to C plus I. C consumption, private final consumption expenditure, and I investment expenditure. Is it clear? So now we shall discuss first what is AD schedule and AD. Now we shall discuss AD schedule and AD curve. So see here. Now I am going to remove this one also because we require more spaces. Now AD schedule and AD curve. We shall discuss this one. To know this, we have to take a schedule first. Here I am going to take schedule, and on this basis we shall draw a curve. So see here. Here we shall draw 4 columns we require. First one is Y. Y is represented for income. Instead of Y here you can write income also, but I have written in short for Y implies income. Write down you. If you are not knowing, so Y means income. Income. Here C implies consumption. Consumption. Here because Y equal to C plus I means investment. I implies investment. And here AD, aggregate demand, in bracket write down C plus I. When we shall add this and this one, C plus I, we shall get AD. Because just I told you AD equal to, according to Keynes, C plus I. So C plus I gives us aggregate demand. So I am going to take a linear consumption function. Here we shall take income like this. And consumption, here this schedule I am going to take. Everything will be clear, don't worry. Let me take this schedule. Now, when you add this one, you will get C plus I, 40, 50 plus 20, 70, 80 plus 20, 100, 110 plus 20, 130, 120, 160, and this one 190. So this is the complete schedule. This is called aggregate demand schedule. Now try to understand. Here income increasing. Later on we shall discuss, according to law, as income increases, consumption also increases. Right now you don't write. Later on we shall discuss. After this clarification of aggregate demand schedule and curve, income also increases. That's why income is also increasing here. But I is constant. Keynes assumes that even at zero level of income, there is certain level of consumption. That this consumption, the consumption at zero level of income is called autonomous consumption, as well as investment at zero level of income, that is called autonomous investment. Investment is of two types. One is autonomous investment and another is induced investment. Later on we shall discuss in detail about this. And induced investment, so I is the
function of y. Right now this will I shall not discuss. Later on we shall discuss this one. Let me clear this one first, because I have to draw the consumption curve, aggregate demand curve. Later on we shall discuss this one. So here you can see income is increasing, consumption is also increasing, but it remains constant. According to Keynes, that investment remains constant in an economy. So that is called autonomous investment. And what is autonomous investment? Investment at zero level of income is called autonomous investment. And consumption at zero level. Some people they have no income, even then they remain surviving, because consumption cannot be zero in the economy. So that even at zero level, you can see here there is certain level of consumption. This consumption is called autonomous consumption. So now draw every diagram, eddy curve. How we shall get aggregate demand schedule? A table that shows different level of consumption or demand, different level of demand at different level of income. Similarly, what is consumption function? The consumption at different level of income. So here we shall draw on this basis of this schedule a curve. So try to understand AD curve. How you will get AD curve. So for this AD curve, consumption curve also. Here I am taking 40, 80. This. Here I am taking the unit of 20, 20, 40. In examination, you can take or you cannot take on both. It is up to you. 60, 80, 100, 120. So we have up to 170 now. Then 100. 40, 160, 180, and this is 200. Now, taking the coordinate, you should know, you are all knowing, आप लोग जानते हो कि coordinate क्या होता है. Again, many students are still in confusion. What is coordinate? I am going to clear for them. This is given in coordinate geometry. Even in class 9, 10 also it is given, perhaps in class 10. And in 11th class it is given in detail, but here I am going to discuss in short. So suppose this is plane area. If you mark any point, this is x-axis, this is y, and this is x dash, this is y dash, and this is our origin. If you mark any point, suppose this point is P, this point is P. If you are taking any point anywhere, you can take. It represents two values. See here, put the vertical axis, a perpendicular line on x-axis. So this value, x value, and if you mark here on y, this gives us the value of y. So value of x. So coordinate is represented by x, y. Coordinate P is represented by x, y. X represents the value of x, this much, and y represents this much. Value of x is called abscissa, ABSCISSA, abscissa. This value is called abscissa. While value of y is called ordinate. Ordinate. One more thing I would like to discuss. This is 4 quadrants. When we divide a plane by 2 axes, it forms 4 axes. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Now, in first quadrant, value of xy is positive. You can see here. But in case when you will come here, suppose this is 5. Sorry, this is 5, and here it will be minus 5. It will be minus 5. So
here the value of x यानी minus x and y value remains in positive. In this case, minus x minus y, both coordinates are negative, but here you will get x but minus y. So this is the form of coordinate. I think you are knowing, आप लोग जान रहे हो इस चीज को. फिर इसमें बाद में जब स्लोप की बात आएगी तो tan थीटा का मान यहाँ नेगेटिव आएगा स्लोप का. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्म हो रहा है एंगल फॉर्म होगा. मैं बाद में बताऊंगा, स्लोप की बात आएगी मैथमेटिक्स की. मैं थोड़ा सा भी बता रहा हूँ. कोऑर्डिनेट कैसे लोगे आप? मान लो 0 और हमको कंजंक्शन करना, वी हैव टू फॉर्म. तो 0 20 बिकॉज़ वी आर गोइंग टू मेजर इनकम. हम लोग यहाँ मेजर कर रहे हैं. आइदर यू राइट आउटपुट और इनकम, बोथ आर सेम. Here we are going to consider C and I. C and I both we are going to measure on y axis. तो x axis पे हम लोग इनकम मेजर कर रहे हैं, that is y, और y axis पे we are measuring both C and I. That's why I have slashed C and slash I. Both I have indicated here. So you have understood this one now. आप लोग देख लेना फिर से. मैं मिटा रहा हूं, अभी हमें डायग्राम ड्रॉ करना है. नाउ ये बेसिक है कोऑर्डिनेट का, आपको जानना चाहिए. नाउ टेकिंग कोऑर्डिनेट, पहले कंजंक्शन कर्व हम खींचते हैं. टेकिंग कोऑर्डिनेट ऑफ इनकम व्हिच इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस एंड कंजंक्शन मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस. तो जब आप कोऑर्डिनेट लेके पॉइंट डालोगे तो यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस. इस तरह का कर्व यू विल गेट कोऑर्डिनेट लेके. तो आप देख लो, ये दिस इज 0 और ये जो पार्ट है जो कि 0 लेवल पे कंजंक्शन शो कर रहा है, दैट इज सी बार. मैं बाद में अभी लिख लो ऑटोनोमस कंजंक्शन. इंडिकेट करो ये दिस पार्ट एट 0 लेवल कंजंक्शन कर्व बिगिंस अबव द ओरिजिन. ये 20 से देखो ना, यहाँ पे 0 और 20 है तो कंजंक्शन कर्व 0 को 20 का कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा तो यहां से शुरू होगा. 40 50 यहां आएगा. देखो यहां 50 आ रहा है. तो दिस टाइप ऑफ कर्व यू विल गेट. दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन कर्व. आप लोग कोऑर्डिनेट लेके बना सकते हो. यू विल गेट सेम लाइक दिस कर्व. दिस कर्व इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. इट रिप्रेजेंट्स दैट, इट शोज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजंक्शन आल्सो इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई द कर्व it is upward sloping curve. Conjunction curve is upward sloping curve. अब देखो, अगर अब AD खींचते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड कर्व, हम लोग I भी खींच सकते हैं. उसके बाद I देखो, I is constant, it remains same at any level. मान लो 40 है, 40 पर भी देखो 20 है. एक x लेंगे, ये y का वैल्यू, ये y पे देखो हम लोग मेजर कर रहे हैं 20. तो अगर आप एनी इनकम का लेते हो, द वैल्यू इज कांस्टेंट. दैट्स व्हाई द इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लिख लो आप लोग को, इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज आई कर्व. व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ इनकम. सो दैट इज व्हाई आई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो यू गॉट आई कर्व आल्सो. टेकिंग कोऑर्डिनेट लेके बनाना आप लोग. हम तो डायरेक्ट खींच रहे हैं ताकि जल्दी हो. आप लोग कोऑर्डिनेट लेके बनाना. सेम कर्व यू विल गेट. कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 20 40 20 80 20 और ऐसे बनाओगे. y एक्सिस पे i मेजर किए हैं, देखो यहाँ i लिखा हुआ है, यहाँ पे i लिखा हुआ है. तो यू विल गेट ए कर्व व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस. अब देखो एग्रीगेट डिमांड 0 40, तो 40 यहाँ है मेरा, और इट विल, इसका डिफरेंस कितना है? 20 का. तो यू विल गेट व्हेन यू विल टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ 40 70 80 100 120 130, you will get a curve which is parallel to AC. क्या मिलेगा? This is called AD, or in bracket you write down C plus I. तो and the difference of this, देखो ये जो गैप आ रहा है, this gap represents investment. यहाँ investment लिख लो. ये gap है due to investment, because the difference of this and this is I. AD और इसका डिफरेंस करो कंजंक्शन का तो I मिलेगा. कोई भी करो ना,
40 minus 20 20, देखो 40 minus 20 20, 70 minus 50 20, 100 minus 80 20. तो ये गैप कंजम्पशन कर्व का और एग्रीगेट डिमांड का जो डिफरेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व, the gap represents investment, that is autonomous investment you can say, so that you have understood this one also. So aggregate demand curve clear, consumption curve is also clear, investment curve is also clear. So with the help of this schedule we can get, or what is demand, how you get curve when a aggregate demand schedule or any schedule is depicted on a graph, it gives us a curve. That's why we got this curve from this schedule. Now I think you have understood this one very well. Later on we shall discuss more about this. First we shall discuss what is aggregate supply. Again I am going to revise what is the consumption, investment, what is the consumption, you know, consumption expenditure for the demand for goods and services, whatever expenditure is made by household, that is consumption. And AD, it is the sum of consumption and investment, we get AD. When we depict this schedule on a graph, we get a curve, so that we got this consumption curve and aggregate demand curve. I think you have understood this one very well. After knowing this, we shall understand now, discuss the aggregate schedule and aggregate supply. So let us start. What is aggregate supply? I am going to remove this one. Now write down aggregate supply. Now write down what is aggregate supply. In this chapter we shall learn more. Very important topic is this going on. So now write down what is aggregate supply. Yes. Now aggregate supply. Aggregate supply. It is in bracket AS. Write down AS, aggregate supply refers to the total supply of goods and services by all the producers in an economy in a year. What is this? Aggregate supply refers to the total supply of goods and services by all the producers in an economy in a year. This is the definition of aggregate supply. Now, what are the components of aggregate supply? You know, aggregate supply is equal to Y or equal to C plus S. Write down like this. Now you will say, sir, how aggregate supply becomes income and how it is C plus S, consumption and saving? How? Try to understand. Suppose I am taking an example of very small farmer, single farmer. A farmer produces 10 quintal wheat. Try to understand. A farmer produces 10 quintal wheat. This 10 quintal is his output, his supply to the economy. And when you multiply this
at the rate, suppose rate is 2000 per quintal, 2000 per quintal, then it becomes value 20,000. This 20,000 is his income. Try to understand through an example. एक फार्मर 10 क्विंटल गेहूं पैदा करता है, wheat produced by that farmer. This is his supply to the economy. उसका ही सप्लाई होता है. Now this aggregate supply, total supply is how much? 10 quintals wheat. अगर की मार्केट प्राइस पे मल्टीप्लाई करो, ये उसका क्या हो जाता है? 20,000. ये उसका इनकम हो जाता है. This is his income that is represented by Y. तो देखो एग्रीगेट सप्लाई इनकम बन गया. एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम कहते हैं. पहले यहां ध्यान देना. और इनकम का दो ही काम होता है. मान लो या तो कंज्यूम करेगा और सेव करेगा आदमी. तो अगर वह आदमी इस 15-20,000 में सपोज कि ही कंज्यूम्स, सी कंजम्पशन उसका है 15,000 उसने कंजम्पशन किया. एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एटसेट्रा. तो ये ऑन ट्रैवलिंग आल्सो, ये कंजम्पशन उसका 15,000 है. तो रिमेनिंग मनी, ये 20,000 में 15,000 खर्च किया तो 5,000 जो बचा, दिस 5,000 इज हिज सेविंग. ये सेविंग है. और ये दोनों अगर जोड़ दो, C प्लस S, जहां मैंने लिखा है उसका टोटल इनकम होता है कि नहीं? 15 5 20,000 हो गया कि नहीं? सो C प्लस S, आइदर यू राइट AS इनकम कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम कहते हैं, और यह इनकम आइदर इट इज कंज्यूम्ड और सेव्ड. और अगर C प्लस S करेंगे तो Y के बराबर आएगा. तो आप कंसेप्ट यहां समझ में आ गया. AS को तुम Y लिखो या तुम AS इक्वल टू Y लिखो या C प्लस S, तीनों बात एक ही चीज है. अब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल लेंगे और उसके बाद we shall draw a curve कि भाई एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल का कर्व होता कैसा है. Try to understand with this help of a schedule. I am going to take a schedule. Note down all these. एक शेड्यूल हम ले रहे हैं. ये शेड्यूल है मेरा. ध्यान देना, यहां पे हम इनकम लेंगे, हियर वी शैल कंजम्पशन लेंगे, और सेम शेड्यूल हम लोग लेंगे जो हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिया था. जस्ट बिफोर वी हैड टेकन ए शेड्यूल. ये मेरा y है जो कि इनकम होता है, अभी बताया था मैंने आपको, और मेरा ये c है. अब देखो अगर y इक्वल टू, अभी देखो y इक्वल टू C प्लस S मैंने बोला है अभी तुरंत, और प्रूफ भी किया थ्रू एन एग्जांपल. तो मान लो कि अगर हमको S निकालना रहे तो क्या करेंगे? S अगर निकालना है तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इधर ले आएंगे, y माइनस C नहीं हो जाएगा. आप इधर ले आओ ना C को, तो y माइनस C. अरे मान लो इनकम है, कंजम्पशन कितना किया? तो अगर 10,000 इनकम है किसी का तो उसने 8,000 कंजम्पशन किया, तो कंजम्पशन में कंजम्पशन को घटा देंगे इनकम में, तो इनकम माइनस कंजम्पशन सेविंग देगा. तो अब हम लोग जो शेड्यूल लेंगे, सेविंग निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग कंजम्पशन फ्रॉम इनकम, और उसके बाद ये हमारा एस आएगा जब हम C प्लस S करेंगे, दैट इज AS C प्लस S. तो हम लोग सेम वी शैल टेक 40, 80, 120, 140, 160 एंड 200. अब ध्यान देना कि कंजम्पशन अभी थोड़ा देर पहले लिया था हमने कि 0 पर भी कंजम्पशन था, तो दैट वाज ऑटोनोमस कंजम्पशन. उसके बाद हमने 30 का बढ़ाया था क्योंकि इनकम इंक्रीज करता है तो कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज. तो हम लोग यहाँ पे 50 लिए थे, फिर 80 हुआ था हम लोगों का, यहाँ पे 110 था, यहाँ पे फिर हम लोगों का सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में. 120 के बाद 160 होगा और यहाँ पे 200 होगा, तो 160 के यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कितना? 140, और ये हो जाएगा 170. ये शेड्यूल था हमारा कंजम्पशन का. नाउ इसमें इसको माइनस करते चले जाएंगे, वी शैल गेट सेविंग, बिकॉज इनकम में जब कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हियर सी
एस इक्वल टू सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम में भाई घटाते चले जाओ, 0 माइनस 20 वी शैल गेट माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 80 माइनस 80 0, 120 माइनस 110 वी शैल गेट 10, 160 माइनस 40 ये हियर वैल्यू वी शैल गेट 20 और यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 30। सो वी गेट सेविंग, ये मेरा सेविंग आ गया। अब देखो यू ऐड दिस टू, अगर इसको ऐड करोगे तो सेम यू विल गेट 20 प्लस माइनस 20, तो यहां पर फिर मेरा 0 आ जाएगा। 50 माइनस 10 देखो कितना आएगा 40 वी शैल गेट 80 माइनस 0 इट रिमेन्स सेम 110 प्लस सी प्लस एस कर रहे हैं ना, 110 प्लस 10 इट विल बी 120, फिर यहां पे 160 हो जाएगा ये, और ये मेरा देखो 170 प्लस 30 200 होता है। ये शेड्यूल हमारा एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है। ऑन दिस बेसिस वी शैल ड्रॉ ए एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब आप लोग फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लो, यहां पे ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ध्यान देना, अगर यहां पे 40 लेते हो, यहां भी 40 लेना पड़ेगा। अगर सी प्लस एस वी आर गोइंग टू ड्रॉ, तो सेम डिस्टेंस जितना लगे यहां, फिर 80 के लिए उतना ही, फिर उतना 120 के लिए उतना ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज हियर वी आर मेजरिंग सी एंड एस, कंजम्पशन एंड सेविंग वी आर गोइंग टू मेजर ऑन वाई एक्सिस। हियर वाई एक्सिस दो 0 दो, यहां पे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। व्हेन टेकिंग कोऑर्डिनेट, अगेन फिर कोऑर्डिनेट की बात आ रही है। मैंने थोड़ा सा पहले बताया था अभी कोऑर्डिनेट किस तरह लोगे। यहां हम लोग y को लेते हैं, ये लिखना जरूरी है यहां पे कि व्हाट यू आर मेजरिंग ऑन एक्स एक्सिस। वी आर मेजरिंग ऑन एक्स एक्सिस इनकम, और तो कोऑर्डिनेट लेंगे 0 0, तो 0 0 कोऑर्डिनेट मेरा यहीं पर आएगा, ये कोऑर्डिनेट आएगा। फिर 40 40, तो मान लो ये 40 है मेरा, ये भी 40 है, ये मेरा 80 है, ये 80 है, तो 40 40 फिर यहां आएगा, फिर 80 80 अगर करते हो तो यहां आएगा। इट मींस व्हाट, दिस कर्व will pass exactly between these two axes, exactly pass करेगा, because जितना वैल्यू मेरा y का है सेम वैल्यू s का है, देख लो दोनों बराबर है। तो जब कोऑर्डिनेट लेंगे तो कोऑर्डिनेट बिल्कुल बीच में आएगा दोनों का। दैट इज व्हाई वी शैल गेट ए कर्व, दैट इज दिस कर्व इज 45, बिकॉज ये मेरा दोनों एक्सिस जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और जब इस बीचे बीच जाएगा नेचुरली इट फॉर्म्स 45 डिग्री। तो ये जो मेरा एस कर्व है, एस कर्व, और यू कैन से y इक्वल टू सी प्लस एस, ये कर्व मेरा हमेशा याद रखना कि ऑलवेज यू विल कीप इन मेमोरी द 45 डिग्री लाइन इज आवर इनकम लाइन। हियर आई एम राइटिंग हियर 45 डिग्री लाइन इज इनकम कर्व और इनकम लाइन, ये याद रखना आप लोग। अभी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट, अगर अपना कोऑर्डिनेट लेके देख लेना तुम लोग, y का ये शेड्यूल बना लो, कोऑर्डिनेट लेके खींचो, एग्जैक्टली यू विल गेट 45 डिग्री लाइन। तो यू गॉट एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे, जिससे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ेंगे, सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ लीनियर सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन से डेरिवेशन होगा सेविंग फंक्शन। बहुत अच्छी चीजें हैं। इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 6 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा, यानी तो 4 नंबर में। बहुत अच्छा। अगला वीडियो कभी मिस मत करना। ये बेसिक कंसेप्ट था कि किस तरह का कर्व होगा, CS क्या होता है, AD क्या होता है, AS क्या होता है, हाउ यू विल डिराइव ड्रॉ दी कर्व, हाउ यू विल टेक द शेड्यूल, ये सारा चीज मैंने डिस्कस किया। अगले वीडियो में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जो कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद वाला वीडियो में मल्टीप्लायर पढ़ाएंगे। मल्टीप्लायर से हर एक साल 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जो कि इसी चैप्टर का है। तो आप लोग अगला वीडियो देखना, ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ज्यादा और लेता हूं। इसलिए मैं, अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के बीच शेयर करना, और इससे मैक्सिमम से मार्क्स उठाने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।